Hello viewers, today we will discuss about idiom. That what is an idiom? I have written six idioms over here which we are going to discuss. Before going to these idioms, we have to know about idiom. That what is an idiom? Idiom is a group of words that does not give its literal meaning. In simple words, a group of words which gives hidden meaning. अल्फाजों का एक ऐसा मजमुआ है जो अपनी रियल मीनिंग नहीं देता है, वो हमारा क्या कहलाता है? इडियम ही कहलाता है. द वेरी फर्स्ट इडियम इज बेटर हाफ. बेटर हाफ मीन्स वाइफ. हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? इनको हम लोग जुमले में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? लाइक एवरीवन मस्ट बी सिंसियर टू वंस बेटर हाफ. मतलब हर किसी ने अपने वाइफ के साथ सिंसियर होना है और हर किसी को अपने वाइफ के साथ सिंसियर होना चाहिए. Second idiom is a shortcut. Shortcut means a shorter way. How to use this idiom in a sentence? There is no shortcut to success. मतलब कामयाबी के लिए कोई आसान तरीका नहीं है. Idiom number 3 है time and tide. Time and tide means time means ज़माना, वक्त. ओके, इसको हम लोग किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जुमले में? टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन. वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता. सेकेंड इडियम है ट्विडल विद. ट्विडल विद मीन्स टू प्ले विद, किसी चीज़ के साथ खेलना. सेंटेंस है स्टॉप ट्विडलिंग विद पेंसिल एंड लिसन टू मी अटेंटिवली. मीन्स डू नॉट प्ले विद पेंसिल and listen carefully. After that, we are having another idiom like join the majority. Join the majority means to die. Okay, when someone dies, then we can use for him like he has joined the majority. So I have written a sentence over here like his friend has joined the majority. उसके दोस्त ने majority इख्तियार की, means उसके दोस्त मर चुका है. The last idiom is dog's life. Dog's life means miserable life. Okay, मतलब मुश्किल जिंदगी, सख्त जिंदगी. Okay, we have used it in a sentence like he spends a dog's life. So these were the idioms which we have discussed, and these are the very important idioms. Thank you for watching.